Hello students, this is TG classes. I am Sushil Ghildiyal and today you are learning exercise 5A of RSA book. So what is the question there in RSA book? Question number 3 to we will solve till 27 and all these covers which method? A dot B is equal to 0, that means zero product rule. These all belongs to the zero product rule category. So first of all, let's see here question number 3. What is there in 3? It is given 16x square is equal to 25. 16x square is equal to 25. Here it consists of, it belongs to the subcategory or subtype which is x square is equal to a square. It is of this form, subcategory or subtype under type 2 quadratic equations, under type 2 which belongs to zero product rule. In zero product rule, what we do? There should be a quadratic equation, and if it is not so, then we will have to convert it linear to quadratic, and thereafter we apply a dot b is equal to 0. So first of all we factorize, there should be a quadratic, we factorize it, and afterwards at last we apply zero product rule. Okay, and that should be in the form of a dot b, only then we can apply the zero product rule. So here this is in the form x square is equal to a square, this is also quadratic form, one of the quadratic type, x square is equal to a square. Then what we will do, we make it a perfect square. The steps what we will make, convert to perfect square. So how it has been, you can do it 4x square is equal to 5 whole square. Now what we do, we shift this 25 towards left. So 4x whole square minus 5 whole square is equal to 0. So this becomes a square minus b square form. We are getting a square minus b square form, which gives a plus b and a minus b. This one we get through this. So now we will apply this a plus this whole complete 4x is a and this complete 5 is b. So the solution would be 4x plus 5 and 4x minus 5 is equal to 0. Now it whole becomes a and this one b, a dot b is equal to 0. Now it has turned to this category, to this form, a dot b is equal to 0. Now we can apply zero product rule. So on applying zero product rule, what we get? 4x plus 5 is equal to 0 on applying zero product rule, zero product rule. So in this way we are going to get 4x is equal to minus 5. That means we are getting x is equal to minus 5 upon 4. So we got one solution of the equation 5.4. Solve means that you have to find the value of the this x, which is unknown, which is a variable also and unknown. So we have to find the value of the minus 5.4 is one of the value, one of the solution of the equation. Now again we take this b is equal to 0, that brings what, that through this we get 5x minus 5 is equal to 0, and on shifting this minus 5 towards the right we are getting 4x is equal to 5. That means x is equal to 4 upon that means x is equal to 5.4, x is equal to what, 5 upon 4. So we got both the values, these are the values. We have solved this by through factorization. We have solved this. First of all what we did, the quadratic equation given, we factorize this
into a dot b product form is equal to 0, and thereafter taking one by one, a is equal to 0, then b is equal to 0, we got the answers to the solutions. So, these answers are perfectly matching with the answer. 5.4 and minus 5.4 are the solutions to the equation, given equation. Now, we move on to the fourth one. Answer fourth. What is there in this question? It is given x square plus 2x is equal to 20. It is a complete quadratic equation. It was complete standard quadratic equation. Standard quadratic equation. However, this one was also a quadratic equation, but here you see the x was not here. So, it becomes easy to make the perfect square there, in that case, in upper case. And now it is a standard quadratic equation, which is x square, ax square plus bx plus c is equal to 0. However, a is equal to 1 over here. So, it can also be written, if you eliminate this, then it can also be written as a x square plus bx plus c form. There is a is equal to 1 here. So, now what we do? First of all, we will shift 24 towards the right. So, we will getting x square plus 2x minus 24 is equal to 0. Okay. Now, it comes in the standard form. Now, it has become into standard form. That one also standard form, this one is also standard form. Okay. Now, what we say, suppose you do 24, you factorize, you take the prime factors of 24, this is c. So, factorize c, because there is no a here, so factorize c, that its factors, c is what? C is minus 24. So, factorize in such a way to get b, this one is a b, the middle term is b. So, factor in such a way to get b, and because c is negative, so here you will get b in the form of subtracting the parts, subtracting the factors, in subtracting factors. Okay. So, 24 how you get? 2 1 2 2 4, 2 6 12, 2 3 is 6. So, 3 2 is 6 and then minus 4, 6 minus 4. So, here you will do 6 minus 4 into x minus 24 is equal to 0, x square, opening the brackets, you are getting, because how you get the c? C should be minus 24. So, 6 was 24 minus 24, you are getting c minus 24, isn't it? So, that means we are doing the perfect. Okay. So, now you take out this bracket, 6x minus 4x you are getting, minus 24 is equal to 0, making pairs. So, after forming the pair, grouping it, what you see? Taking out x outside, you get x plus 6, and then taking out 4 outside, you are getting x plus 6, 6 was a 24, minus 24. So, in this way we got its factors. The factors are x plus 6 and x minus 4 are the factors to this equation. Now, we got it in the form of a dot b is equal to 0. Now, we can apply what? 0 product rules. So, first of all, taking this a part, so x plus 6 is equal to 0, and taking this towards the right hand side, this number we are getting x equal to minus 6. So, one value of x we got x equal to minus 6, and other taking the b part also taking. So, this is what we applied, applying 0 product rule, and taking the rest part which is b, which is x minus 4 is equal to 0, we are getting x is equal to 4. We got the other solution also, and again we applied the 0 product rule. In this way we got the answer. The answers to the solutions are x is equal to minus 6 and x is equal to 4. So, we can put it in this bracket, middle bracket, curly bracket. So, the answers are minus 6, 4, and answers are minus 6, and there is one error also, should be minus 4, isn't it? So, how it would be minus 6, minus 4x plus 24, x plus 6 you are getting, this one second one, x plus 6 is okay, x equal to minus 6,
and then what we get, x plus 6 was a 24 minus 6 minus 4, that you are getting 2x. So 6x minus 4x 24, it's okay. Then getting this minus 4 x, here it should be, I think so, because minus, it's okay now. Then where there is error, isn't an error, because the answer there is minus 6 and minus 4. Students, this was not minus 4 here, it was plus 4. Correct it. So we got the perfect answer here, perfectly matching with the textbook answer. Okay, now we go on to other questions. So we see this fifth one is also similar to the above, sixth one is also similar, seventh one also same, isn't it? So all the following questions 5, 6, 7, 8 and till 9th, you can say, are similar to the above question, isn't it? All those questions similar. I don't find there any difference between the rest of them. So I don't find any difference between. Okay, so these would be your homework. You can do it till, I think you can do it up to these are all you can do very easily from fifth onwards, 5th, 6th, 7th, and thereafter till 9. And this one is also similar, this one. So but I would like to tell, this is all homework, all similar questions are there. Now I'm going towards to the 10th one. So answer number 10th, I'm erasing these ones. This hope you would have noted, students. So this type 2 is going on, which is the zero product rule. We are applying zero product rule, and the subtypes are there. So I have mentioned you this is the subtype 1, isn't it? And these all are, you can consider this all till here, all subtype 2, which is quadratic ones. Till here all are subtype 2s. This one also subtype 2 till here. Till here you can, it can be done easily till here. All are of subtypes, under the subtypes till here also. Okay, this one I can do, I will do this one subtype 3. So till 18 you can do it easily, I think so. Subtype 3, and thereafter it will be, these all again, these are the subtype 2, this one, and from here it becomes to subtype 3. It starts subtype 3. Again this is subtype 2, isn't it? So this is the way how you can distinguish the questions into different subtypes. Okay, now I am going to do the 10th question. So what is there in question 10th? Question 10th, what is there? Let's see what's there in question 10th. Here question 10th says, this one is 10th, answer 10th, solution 10th. So what is there? The question says 3x square is equal to 5x. 3x square is equal to 5x. So in this question it is, however, x square plus bx, that is also quadratic one, however c is not there, so shift this towards right. So we will get 3x square minus 5x is equal to 0. So taking x common, so we are getting 3x minus 5 is equal to 0. Now it comes to the zero product rule. This is a and this is b, this complete b, this is
bracket outside is a. So now on applying, what we say, taking this a is equal to 0, taking x is equal to 0, one answer is 0 by 0 product rule. Okay, and now taking the other part b, rest part, we take 3x minus 5 is equal to 0, which gives, again we are applying the 0 product rules. So what it gives, 3x is equal to 5, it's giving, so x is equal to 5.3. So there are two solutions to the above question, which is this, which is the 10th one. So we are getting 0 and 5 and 3. This answers to the questions are 0 and 5 upon 3, which is perfectly matching with the textbook answer, perfectly matching. See here, the 10th one you get 0 comma 5.3. So in this you can do this question, you can, this one is of the previous one, like this one. So here, not the previous one, it is also one of the subtype, so you can consider it as a simple subtype 2 or 3, subtype 3, then it will become subtype 4, isn't it? It is also similar to that one, no, not so, then it becomes subtype 5. Okay, it's categorized, we have categorized the above questions after above exercise. So now we go on to the 11th one. 11th one, this is, you can categorize it in a subtype 7. So 11th, what is there in question number 11th? Okay, so 11th I would be teaching in Hindi. तो 11th क्वेश्चन में क्या है भाई, 11th क्वेश्चन में x plus 3 और x minus 3 is equal to 27 गिवन है. दिस इज द 11th क्वेश्चन. इसमें ये देखो कि इसमें a ये बन गया, चलो 20 को मान लेते हैं, पर यहाँ 0 नहीं है, देयर इज नो 0, सो वी कैन नॉट अप्लाई द 0 प्रोडक्ट रूल. So what will you see, we have to factorize it completely, and so it will convert in quadratic, and thereafter we can apply 0 product rule. So on factorizing, this is a plus b and a minus b form. So a plus b and a minus b becomes a square minus b square, isn't it? But this will not help us, it will not. So we will factorize it, we will multiply it, we will product it. So we are getting x square. तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो x से x को आपने प्रोडक्ट किया तो x स्क्वायर हो गया, फिर आपने x को इसको करे तो माइनस 3x हो गया प्रोडक्ट करके, क्योंकि a डॉट b तो है लेकिन यहाँ 0 नहीं है. ठीक है, 0 प्रोडक्ट रूल इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा, तो इसलिए x स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस 3x हो गया ना, x स्क्वायर माइनस 3x फिर हो गया प्लस 3x. ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 27 हो गया. अब 1 प्लस 1 माइनस तो कट जाएगा, तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर, और इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे इधर की तरफ. ठीक है, तो ये आपका जब ऐड होगा ना 16 36 बनेगा, नहीं बनेगा. तो इन दिस वे वी आर गेटिंग, अब ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया. नाउ इट इज कन्वर्टेड टू परफेक्ट, क्या बना है, परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होने के बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा करना. एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट लेंगे 36 का, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इतने, अब ये आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा इसका आंसर, प्लस माइनस 6 इज इट. सो लेट्स चेक द आंसर. 6 और माइनस 6 है, तो इसके दो आंसर आए. आंसर्स क्या है इसके आंसर्स आए प्लस 6 यानी 6 कॉमा माइनस 6. तो दीज आर द आंसर्स टू दिस सॉल्यूशन. 11वां भी हो गया. इसको ऐसे करते, 0 नहीं है तो इसको हमने फिर मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट करके ऐसे करते, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया. तो इस तरीके से 11th भी हमने सॉल्व किया. अब नाउ गो ऑन टू 12th वाला. तो देखोगे कि ये सब एक स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आपका सब टाइप में लगा लो, तो ये क्वाड्रेटिक सब टाइप हो गई. 12th से लगातार जो है
क्वेश्चन आंसर अगर आप देखोगे क्वेश्चन 12 से, और ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, ये भी ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये भी सब है, ये भी वो भी इसी सब टाइप का है ना ये वाला सब टाइप। जैसे ही आ रहा सब टाइप 2 में आ गया, 12 से लेके अगर आप देखोगे पूरा आ रहा है, जितना भी कवर कर रहे हैं ना ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वो सब टाइप में आ रहा है। क्लियर, सारा आ रहा है नीचे तक, ठीक है। सब टाइप 2 है, सारा सब टाइप 2 है, जो ऊपर भी था, ठीक है, ऊपर भी था, ये सारा सब टाइप में आ रहा है, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी फॉर्म है। अब ये हम देखते हैं, आपको कैटेगराइज करना इससे इजी पड़ता है ना, आसानी से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब 12th तो इजी है, 13th भी इजी है, ठीक है, इसमें कोई कुछ है ही नहीं, कोई खास नहीं है कि हम इसको करने की ज़रूरत पड़े, तो फिर भी कोई खास, यू कैन डू इट ईजिली, इजंट इट। अब चाहो तो हम 2-4 क्वेश्चन इसमें बीच बीच में कर लेंगे अगर आप चाहो तो। जैसे 13th का कर लेते हैं, 12th तो आप खुद ही कर लोगे एज ए होमवर्क, ठीक है। तो 12th वुड बी योर होमवर्क, इसको भी होमवर्क कर लो। 13th मैं कर देता हूँ, चलो, हालांकि उसमें कुछ है नहीं। 13th क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, वो उसको देखने में लग रहा है। आंसर 13 में क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये भी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे, ए इज इक्वल टू 12 है यहाँ पे, और सी कितना है 14 है, तो ए इंटू सी करेंगे, तो ए इंटू सी, ए डॉट सी कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 4 48 हो जाएगा, 4 12 12 30 50 16 168 आएगा ना, ए डॉट सी करके। ए डॉट सी में हमें ऐसे करना है कि हमारा जो है प्रोडक्ट 29 आ जाए, इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि वो 29 आ जाए, तो 168। अब क्योंकि सी प्लस है तो दोनों का एडिशन में ही आएगा, एडिशन में कितना आ जाए, दोनों का ऐड 29 आ जाए। 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, तो 7 3 6, देखो 7 3 21 हो गया, और 6 कितना हो गया 21, 29 चाहिए ना मैं, अच्छा ये 8 बन रहा है, तो 8 में तो आ जाएगा 21 और 8 29 हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, फैक्टराइज कर दिया हमने, 12x स्क्वायर और प्लस जो है इसका आएगा, क्या बोलते हैं इसको, 7 3 21, और प्लस हम कर लेते हैं इसमें 8 कर लेते हैं, इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये आया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 8x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ग्रुपिंग करें तो इसमें 3 से आएगा, 3 को बाहर ले से 3x, 3 4 12, 3 7 21। ऐसे यहाँ पे भी हम लेंगे 2 से ले सकते हैं, 2 बाहर लिया, ठीक है, तो इसमें आएगा 2 4 8x प्लस 2 7 14। अब इस तरह से ये दोनों कॉमन आगे, इसको बाहर निकाल देंगे, 4x प्लस 7 और प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इज ओके। तो इस तरीके से हम लेते हैं। अब यहाँ पे ये ए डॉट बी बन गया, दिस इज कंप्लीट ए, दिस इज कंप्लीट बी, ए इसको बीच में हटा दो, 4x प्लस 7 और 3x प्लस 2, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो अप्लाइंग जीरो प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, हम ये करेंगे 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग जीरो प्रोडक्ट रूल। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 4x इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -7/4। तो पहला सॉल्यूशन तो ये आ गया, सॉल्व कर लेना। सॉल्व का मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा फिर ये b पार्ट है, b इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो फिर b इज इक्वल 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 0 से हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू -2 मिलेगा और x इज इक्वल टू -2/3। तो सेकेंड सॉल्यूशन इसका आ गया। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे इसके, -7/4 -2/3 होगा इसका आंसर। ये आंसर्स है टू दिस सॉल्यूशन, आंसर्स द अबव सॉल्यूशन। तो इसका चेक कर लेंगे 13th वाला, -7/4 है और -2/3 बिल्कुल सही, परफेक्ट मैच कर रहा है, इट्स मैचिंग परफेक्टली। तो 13th भी हो गया, 14th आप खुद ही कर लोगे होमवर्क,
ये कोई ज़्यादा टफ तो है ही नहीं सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से सब आसान है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसके अंदर। ऐसे 16 में आसान होगा, तो ये सब होमवर्क होगा, यू कैन डू इट इन होमवर्क। ये वाला ना, हाँ 13 या ये भी होमवर्क कर लो, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वैसे तो इसको कर लेते हैं अगर चाहो तो ज़्यादा टफ तो है नहीं। 16 करना, 16 कर लेता हूँ, चलो मैं 16 में आ जाओ, फिर कोई ख़ास नहीं है वो भी। आंसर 16, होप यू वुड हैव नोटेड। अब नाउ अब हम करेंगे 16th, जबकि ये भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है भाई, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या लग रहा है, जीरो प्रोडक्ट रूल लग रहा है। वी आर अप्लाइंग जीरो प्रोडक्ट रूल टू द अबव क्वेश्चंस, ओके। सो अब हम करते हैं आपको 16th। तो 16th को देखो, ठीक है। 16th में क्या है, 15x, what is there in the English version, man? What is there in the 16th question? We see there is 15x square minus 28 is equal to x, which is also in the form ax square plus bx plus c. So we shift this x towards right, we get 15x square minus x minus 28 is equal to 0. So this is the quadratic form, ax square plus bx plus c, and in this what we do, we multiply a into c. So on multiplying a into c, what we are getting, 28 into 15. So 15 is 120, 15 to the 24, 6, 36. Okay, we are getting 360. So I will factorize 360 in such a way to get this one x. So we are factorizing 360 in such a way to get 1, which is constant. So because the product is the product is minus 360, this is the product. So what we should is the factorization that should be in a subtraction form. The factors whatever we there should be, we should subtract. In order first we will subtract those factors to get this x. Minus is however outside, taking outside the bracket. So taking 2 1 is 2, 2 is 16, 0, 2 9 is 18, 0, 3 3 is 9, 3 10 is 30, and 2 5 is 10, 0. So in this we factorize. 2 to the 4th is 12, this 12, 6 is 30, 30 now. स्टूडेंट्स यहाँ पे होगी थी थोड़ा गलती ना, ये देखो यहाँ पे इसको जो मल्टीप्लाई हमने किया ये रॉन्ग है, सो रॉन्गली मल्टीप्लाइड, ठीक है। व्हाट शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ दिस, बिकॉज 18 5 120 तो है ही, 120 का 0 तो 12 आएगा, 15 to here should be 30, it should be a 30. So we are getting 2 4 420. Okay, now we will factorize this 420. So we are getting 2 to the 2 1 is 2 0, and then 3 7 is 21 0, and then we are getting 2 3 is 6, 2 5 is 10, then 5 7 is 35. This will factorize, we get the prime factors. So now there should be minus 1, sorry 1, taking out minus outside the bracket, you are getting 1, there should be 1, the middle term there should be 1, but the product should be minus 360. So because c is minus 360, so it should subtract in such a way that it should be in a subtraction form, should be in the subtraction, not addition form. The factors should not be in addition form, the factors should be in a subtraction form. So what we do, we take 7 5 is 35, and then 3 to 6 to 6 to 12, or we can also take this way, which there should be a 7 3 is 21, 21 2 2 1 is 2 2 is 42, and so how we get this 21, 7 3 is 21,
5 to the 10, 10 to the 20. So 21 minus 20, in this way we are getting this. So we do 21 minus 20. Didn't I say that factors should be in a subtraction form? These factors should be in a subtraction form. To get minus, the c is minus. So we are getting minus, we multiply these both, 21 into minus 20, then we are getting what? Minus 360 it should be. So here x minus 28 is equal to 0. So now there is no matter this is outside bracket minus, so we will consider only these two. Okay. So 15x square minus 21x minus plus 20x minus 28 is equal to 0. So on grouping, what we get? On take grouping, we are getting 15, 3x. So inside we get 3 5 is 15, 5x minus 3 7 is 21. And taking out 2 5 what 5 4 is 20, 3 5 is 20. Taking out 2, what we are getting? We are getting 2 10 is 20. It's also okay. And 2, then more 3 3 is 9, 4 5 4 6 4 7 is 4. So we are getting x over here minus 7 is 28, 4 5 is 20, and then 7. So taking out these groups, we are getting 5x minus 7, and then 3x plus 4 is equal to 0. So in this way we get a dot b is equal to 0. So now we can apply zero product rule in this. So applying zero product rule, what we get? 5x equal to 7 is equal to 0. Applying zero product rule. So in this way we'll get the value of x, which is x equal to 7 upon 5. Taking the another part, that is b is equal to 0, we are getting 3x, taking on the plus 4 is equal to 0. So in this way we are getting 3x is equal to minus 4. So x would be equal to minus 4 upon 3. In this way we got both the solutions of x. So we would like to match it with the textbook answer of the 16th one. So minus 4 upon 3 is 1 and other is 7.5. So it's a perfectly correct answers. So note down this, students. Now we would be moving on to the, which one? 17. 17 is similar to this. So you can note down it as homework. This one, 17th. This one is homework. And again this one is also same. So okay. So now we will be moving, and this one is also same. So we can do now the 19th one, which is also not tough, not so tough. You can take down the 19th. Okay. If you want me to do that one, 19th question. So 19th question में क्या है बताओ? 19th question देखते हैं. Hope you would have noted this and I'm rubbing it, students. So now we move on to the 19th question. 19th में देखते हैं क्या है इसमें. Let's see what's there. 19th में दिया हुआ है x और 6x minus 11 is equal to 35. ठीक है, हिंदी वर्जन है, हिंदी ट्रांसलेशन. x 6x minus 11 is equal to 35. तो ये भी सब टाइप में ही है, एक तरह से सब टाइप 4 में आ गया. सब टाइप 4 में, क्योंकि a डॉट b तो है, ऑलरेडी वी डिड इट, इजंट इट. तो a डॉट b तो है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो है ही नहीं यहाँ पे. a डॉट b तो है, पर यहाँ पे क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है. तो अब हम किसको क्या करेंगे, फैक्टराइज, इसको सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे ना इसको. तो क्वाड्रेटिक में हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस 11x होगी, इसको शिफ्ट करेंगे 35 हो गया इज इक्वल टू 0. अब ये एक स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, कन्वर्टेड टू क्वाड्रेटिक फॉर्म.
तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ए से सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू सी, और हमें ए इंटू सी करते हैं, और हमें चाहिए मिडिल टर्म की, मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सी माइनस है, बिकॉज सी इज़ नेगेटिव, सी इज़ नेगेटिव। सो मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, ये माइनस तो बाहर है, इससे मतलब नहीं, अंदर वाला जो होना चाहिए वो दो जो आप माइनस में होना चाहिए, देयर शुड बी इन सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ये होना चाहिए अंदर वाला, बी जो बनेगा वो सब्ट्रैक्ट करके 11 आना चाहिए, मतलब बी जो बनेगा वो सब्ट्रैक्ट करके 11 आना चाहिए, प्लस करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि सी इज़ नेगेटिव है, तभी तो हमें दोनों का प्रोडक्ट माइनस मिलेगा ना, जब माइनस मिलना चाहिए मुझे तभी मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटू सी करेंगे, 35 इंटू 6 करेंगे, 6 5 33, 18, 210 आ गया। अब 210 को हम ऐसे इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। फिर आया 5 से कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 कर लो, फिर 3 से कर लो, 3 7 जा 21 कर लो, तो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 7 3 से 21, और 5 2 से 10 हो गया, तो 11 आ रहा नहीं, माइनस करके आ रहा, और माइनस करके ही आना चाहिए क्योंकि सी इज़ नेगेटिव, सी नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टराइज किया, 6x² माइनस 21 और माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल रहा है, 6x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसको पेयर बनाने पर, पेयरिंग करने पर क्या मिला, ये मिलेगा 3 से अगर 3x अंदर आएगा, x माइनस 3 7 जो 21 आएगा, प्लस अगर 5 करेंगे तो अंदर कितना आएगा, 5 2 से 10, यहाँ पे भी 2, 3 2 से 6, यहाँ पे 2 आएगा, देखो 6x यहाँ पे आएगा 2x, और 5 7 जो 35 आ गया। अब ये ग्रुप ये बाहर निकालते हैं कॉमन, 2x माइनस 7, दूसरा आया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, ये ए है, ये बी है, लेकिन ये 0 नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ओपनिंग द ब्रैकेट करके और इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक से फिर दोबारा हमने इसको बनाया, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, अब आ गया ये ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें जीरो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हमने ए इज इक्वल टू क्या करा, 0 करा, यानी 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, अप्लाइंग, क्या लिखना है इसमें, अप्लाइंग ऑन अप्लाइंग जीरो प्रोडक्ट रूल। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिलेगी 2x इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू मिल गया 7/2, तो एक वैल्यू मुझे x की मिल गई। अब ये b वाला पार्ट को 0 करेंगे, तो अनडूइंग जो है b पार्ट 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर इसमें वही करेंगे, अप्लाइंग जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं ना। अब इसमें क्या होगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -5/3 हो जाएगा। तो दोनों सॉल्यूशन मिल गए हमें, ये दीज बोथ आर द आंसर्स। तो आंसर्स क्या आ जाएंगे आपके, 7/2 और कॉमा लगा के -5/3। ये दीज आर द आंसर्स टू दिस सॉल्यूशन टू द above क्वेश्चन, above quadratic question, above equation, not at present it was not quadratic, on multiplying became quadratic question, however taking common it was also quadratic। so अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, आंसर मैच करते हैं 19वां का, तो 7/2 भी है और -5/3 भी है, तो आंसर हो गया, परफेक्टली मैचिंग हो गया, क्वाड्रेटिक है वो, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना, वो लीनियर अलग होता है। अब यहाँ पे देखो, पर प्रॉपर क्वाड्रेटिक में हमने कन्वर्ट किया, ये था अभी 2 लीनियर इक्वेशंस का प्रोडक्ट था ना, इसमें प्रॉपरली हमने इसको क्या है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई करने का। ये दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर्स, ठीक है, इक्वेशंस। अब ये हो गया आपका 19th कंप्लीट हो गया। 20th भी ऐसी है, कोई खास तो मुझे लग नहीं रहा भाई 20th को मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, नहीं करना तो हम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो होप यू वुड हैव नोटेड। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन चलते हैं, चलो ठीक है। तो क्या चल रहा है, दिस गोइंग ऑन, दिस द सेकेंड टाइप where zero product rule can be
apply it. So a dot b is equal to 0. So whenever it would be in quadratic, you can apply the 0 product rule, but it should be in the form of quadratic. For after factorizing, the quadratic should be in the form of a dot b is equal to 0. The factors should be in this form. Thereafter only we can apply the 0 product rule. So coming on to this 20th. So what it says it's given 6x 3x minus 7 is equal to 7 minus 3x. So how would we able to do these questions? So first of all, we will multiply it, open the bracket, this and then this. So because at present it is not in a quadratic form, it's a product of two linears one. So on taking out the bracket, multiplying it, what we get? 18x square minus 42x, and here also we are getting 49 minus 7 is 21x. So on solving, on shifting this x towards the this left hand side, we get 18x square minus 42, and on subtracting 42 and then this becomes positive, but we'll get negative because it's a greater number. So 2 minus 1 1 and 4 minus 2, you get 21, isn't it? So we're getting what? 21x minus 49, shifting 49 towards the left, we're getting this, and now multiply, this becomes a quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, and now we'll multiply a into c, this a into c, to get this b center point. But because c is negative, so in this way we will make its product, make its parts, make its factors to get what? 21 in the form of, it should be in the form of subtraction. We should subtract those parts, those factors, to get 21 and not adding. We should subtract those parts to get this 21, taking out the minus outside, we are getting 25 inside the bracket. So we multiply 49 into 18. So on multiplying, what you are getting, 40 into 18, you are roughly getting 802, and then getting 882. Okay. So on factorizing, what do you get? On taking out the prime factors, 2 4 is 2 4 is 2 1 2, 2 2 is 4, no 3 3 1 is 3 7 is 14, isn't it? 3 1 is 3, 7 is 14. So yeah, 3 7 is 21, 3 5 is 7 is 21, 3 8 is 24. Now this 3 4 is 12, 3 7 is 21, then 7 2 is 14, 7 1 is 7, 3 is 21. These are the factors. So in this way, 42, 7 3 is 21, 21, 42 आ गया, 7 3 is 21, 7 3 is 21. So 21 getting, isn't it? So we are doing 42 minus 21, 42 minus 21 to get what? 21, to get 21. So opening the bracket, solving it, 18x square minus 42x plus 21 x minus 49 is equal to 0. So grouping, on pairing, what we get? On grouping, what we 2, 9 is 2, 1 is 2, 2 is 4, 3. You can take out 3, 3x, 3 5 is 3 6 is 18, 3 1 is 3, 4 is 12. Again you can take out some more part, it can be taken out. So more part I can take out, then 3 to 6, directly 6 over there.
6, x 6 is 18, okay, and then 6 7 is 42. Then here also there should be a 3x inside, isn't it? So we'll multiply 7 3 is 21x, and plus minus 7 is 14, perfectly okay. So taking out this, so we are getting 3x minus 7, and then 6x plus 7 is equal to 0. So now we can apply, because it becomes a, this becomes b, a dot b is equal to 0. It has come into the form of a dot b is equal to 0. Now we can apply zero product rules. So on applying zero product rule, what is 3x minus 7 is equal to 0? How? On applying zero product rule. So we get 3x is equal to 7. On solving, we get x is equal to 7 upon 3. The one solution is this, and on the taking the other part, b is equal to 0, we get 6x plus 7 is equal to 0. So 6x is equal to minus 7. So we are getting x is equal to minus 7 upon 6. So we are able to find out the other part also. The solution to the questions are answers are 7 upon 3 minus 7 upon 6. I hope this would be perfectly matching the textbook answer. So 7 upon 3 and minus 7 upon 6, which is perfectly matching. So now we have completed 20 questions. Now move on to the 21th, which is also the same. 21. Now I'm grabbing 21 question, which would be now Hindi version. 21. What is there in 21 question? 21 में क्या है, देखो 21st जो क्वेश्चन है उसमें कोई खास तो है नहीं। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। 21 क्वेश्चन, में भी वो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखो बहुत ही आसान है। 2x² माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। a² प्लस bx प्लस c है, सब टाइप 2 है ना, 2 है, सब टाइप 2 सब एक ही जैसा है, तो सब टाइप 2 है। ये क्या है 21 क्या है, सब टाइप 2, सब टाइप 2 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी सब टाइप 2 है, नीचे वाला भी, ये भी आपका सब टाइप 2 है, जिसमें ये आएगा ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सब टाइप 2 वाला है। यहाँ से आ जाएगा फ्रैक्शनल, ये वाला फ्रैक्शनल है, यानी सब फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो ये सब टाइप जो है तुम्हारा जो भी बनाया होगा आपने, 5 बनाया तो 5 बना लो, कोई बात नहीं। वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यहाँ से अलग थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उसमें भी एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो आप ये देखते हैं इसमें, देखो इसमें बस ये कहा गया है कि x जो है बिलोंग कर रहा है, उसमें उस कंडीशन में इसके सॉल्यूशन निकालने जब x नेचुरल नंबर बिलोंग करता है और x जब रेशनल नंबर बिलोंग करता है, ठीक है। रेशनल क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो x जब नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है तब क्या आंसर होगा, ये कंडीशन है। और x जब आपका रेशनल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है तब क्या आंसर होगा, 2 आंसर्स आएंगे इसमें। तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, a² प्लस bx प्लस c है, तो a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी करा जाएगा, विच इज़ 20 है ना, 20 आया। अब 20 को ऐसे फैक्टराइज कर, बिकॉज पॉजिटिव है तो ये प्लस में ही आना चाहिए 9, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, तो 5 प्लस 4 हो गया 9, 5 प्लस 4 क्या हो गया 9 हो गया। तो इसमें हमने करेंगे 5 प्लस 4 9 हो गया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x² है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 2x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसे पेयर लेंगे, देखो पेयरिंग करा, पेयरिंग करने के बाद हम पे बाहर आ जाएगा x आ जाएगा, अंदर आएगा 2x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस में 2 बाहर लेंगे तो अंदर x आएगा 2 और फिर माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0। 2x 5 2 ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, पर ये प्लस हो रहा है ना यहाँ पे, तो x प्लस 5 प्लस 10 है, 5 4 20, तो प्लस अच्छा करने पे क्या है माइनस 5x माइनस 4, ठीक है। तो इधर क्या आएगा आपका, माइनस ले लो इसमें कॉमन, ठीक है। तो -2 जब आप लोगे तो 2x आ जाएगा ये आपका, अब ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10, माइनस 2x, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 2 4 है, माइनस 4x हो गया, प्लस हो गया, और 5 2 10। अब ये पेयर बन गया आपका दिस वन,
तो टेकिंग आउट, इसको बाहर निकालने के बाद क्या होगा, ये मिलेगा, ये जो छूटा हुआ इसको भी ले लोगे। तो अब क्या मिल गया मुझे, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या निकालें, जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये a इज इक्वल टू 0 करा, फिर b इज इक्वल टू 0 बाद में करेंगे। अभी क्या कर, बाय अप्लाइंग जीरो प्रोडक्ट रूल। तो जब जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x बराबर 5। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 5.2, एक सॉल्यूशन तो मिल गया हमें। अभी b इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो b इज इक्वल टू 0 करने पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो दूसरा मिला मुझे x इज इक्वल टू 2। तो दो आंसर मिले। अब ये चेक करना है कि जो पहले वाला पार्ट का आंसर कौन सा है। ये फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, उसमें ये बोला गया कि व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो ये है, तो तब ये आंसर केवल यही आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। ये है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब आंसर नंबर जब हम 2 देखेंगे सेकंड पार्ट का, तो तब हमें फ्रैक्शनल नंबर चाहिए, तो तब आंसर क्या आएगा, तब आएगा सेकंड पार्ट का 5/2। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आएगा और सेकंड पार्ट का आंसर नीचे वाला आएगा। तो लेट्स चेक करते हैं चलो 21 का। एक तो दो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, पहले पार्ट का जब नेचुरल नंबर का सेट है, और जो रेशनल नंबर का सेट है तब आया। तो अच्छा एक चीज़ और है, जब रेशनल नंबर तो 2 भी है ना, इजंट इट, तो 2 भी तो रेशनल नंबर है, तो 2 है और आपका तब दोनों आ जाएगा, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी तो लिख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/1। तो p/q फॉर्म में तो आ ही रहा है ना, p/q फॉर्म में है, तो p/q फॉर्म में जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो इसलिए ये जो सेट बनेगा रेशनल नंबर का 2,5.2 बनेगा। इसमें आपका ये बन नहीं सकता नेचुरल नंबर। तो क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 जहाँ तक जाएगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट छूट जाएगा इस वाले में, क्लियर। तो इस तरह से हमने 21 कर दिया। 22 जो है वो भी एज अ होमवर्क आप कर सकते हो, कुछ नहीं है उसमें। उसमें इंटीजर है भाई, यहाँ पे क्या लिया था हमने, नेचुरल नंबर और वो लिया था। 22 में तो रेशनल नंबर है जो बिल्कुल सेम है। 23 में आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा। 23 बहुत आसान है, फिर भी कर लेते हैं चलो। वी कैन स्टार्ट डूइंग द 23 वाला। 23 क्वेश्चन, हाउएवर इट इज ऑल्सो ईजी इन इंग्लिश वर्जन। सो 23 we go on for the 23rd question. ठीक है, these all are going the type 2 questions, zero product rule, which where we can apply the zero product rule. So in this category, in that sequence, one more question is there, that is the 23rd question. Here it is given 3x square plus 11x plus 10 is equal to 0. This is the 23rd, 3x square plus 11x plus 10 is equal to 0, and we have to calculate its solution when x belongs to the set of the integers. Set of the integers, 23rd is there going on. So this is in the quadratic form, ax square plus bx plus c. So what we do, we multiply a into c to get the b, because both are positive. A into c, the product we get is positive, hence b should be factorized in such a way that the sum of the factors should be positive. Sum of the factors should be positive to get 11. So in this way we do 10 30, and on taking out its prime factors we do this 2 5 the 10, factorize this. So we have 5 to the 10, okay, 10 to the 30, and now to get the what, we are getting 11 for 10, and then there should be addition, should be 11, addition should be what, let's check the question, it's okay or not. 3x square plus 11x plus 10, it's okay one. So when x belongs to set of integers, 3 10 30, okay, you can do is this way also, 2 to 15 and 3 5 15 also become the same. So 15 minus
50 plus 3 to 6, 6 plus 5. 6 plus 5 gives 11. So this both should be positive because the C is also positive. So the factors should be added to get 11, not subtracted. Factors should be added. So we are adding the factors. So in this way we are getting 6 plus 5 x plus 10 is equal to 0. So 3x square plus 6x plus 5x plus 10 is equal to 0. On grouping, what we get? We are getting 3x, that means inside x, 3 to the 6 plus taking out 5 outside, we are getting 5 to the 10. So in this way we get the common out, we are getting the common out x plus 2, and the rest part is 3x plus 5, which is equal to 0. So now what we can, because it is in the form a dot b is equal to 0 form, so we can now apply zero product rule. So on applying zero product rule, what we are getting, x plus 2 is equal to 0, applying zero product rule. So in this way we get the value of x is equal to minus 2, and the other value on taking the b part, b is equal to 0, so we get 3x plus 5 is equal to 0. In this way we are getting 3x is equal to minus 5, which gives x is equal to minus 5 upon 3, which is the other value of the solution, other value of that given quadratic question, other solution. So in this way we got two values, minus 2 and minus 5 upon 3. But what is this question saying? So when it is an integer, so integer is this, you can see the number line here, it covers all the positive numbers as well as it covers also the negative numbers also, set of all numbers which are positive as well as negative along with 0 as it's, so integers. So that means the answer would be minus 2 also and 5 upon 3. The set should consist of the both the negative numbers, whether they are in the but integers means it should not be in a fractional form, isn't it? Integers, it should not be in a fraction form. However, it should be negative, but not in the fractional form. So we got the answer, 23rd answer. What is the 23rd answer? That's minus 2, which is perfectly matching. So this is okay. Now we move on to the what, 23rd. 23rd is also same. So hope you would do it as a homework. 23rd we did. Also 24th. I am saying over the this one should be homework. 22nd should be homework. This one. Okay. So we did 23. Now move on to 24th. 24th. So we are rubbing, and now moving on to the 24th question. 24th क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, बाकी कुछ, सॉरी, यस इट इज़ इन द फ्रैक्शनल फॉर्म. फ्रैक्शनल फॉर्म है 24th में देखो आप कि इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म और टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम लेने के बाद जो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम इजीली जो है इसमें जीरो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, और लगाने के बाद आंसर आ जाएगा. 24 देखो, 24 में क्या देगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही है, इज इक्वल टू 3 1 अपॉन 3, ये दिया हुआ है 24 में. और x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये भी x होगा, 0 हो जाएगा तो ये फिर डिटरमाइन नहीं पाएगा ना, वी वोंट बी एबल टू डिटरमिन इट. डिटरमाइन नहीं होता एक्चुअली स्टूडेंट्स, डिटरमिन होता है, डिटरमिन इंग्लिश. तो क्या होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, सो वी वुड नॉट बी एबल टू डिटरमिन when x so is equal to 0. so क्या होगा, x को हम 0 नहीं लेंगे, ठीक है, तो अंडरस्टूड हम ले ही नहीं रहे, वी आर नॉट टेकिंग. अब इसमें क्या होगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 ऐसे आएगा. क्योंकि अभी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम एलसीएम लेके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, फिर a डॉट b में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा. तो अपने देखो बहुत इजी हो जाएगा, है ना. तो x आया 1x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 हुआ. इसको हमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा.
प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 10x आ जाएगा। अब फिर ये आएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ax² प्लस bx प्लस c। अब 3 इंटू 3 कर लेते हैं, 3 इंटू 3 क्या होगा 9 होगा। अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है तो ये भी प्लस में ही मिलना चाहिए हमें 10, तो 9 इंटू 1 भी कर सकते हैं 9 को, और 9 प्लस 1 10 भी होता है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, 9 प्लस 1 कर देंगे हम, तो यहाँ पे 9 और प्लस 1 क्या होता है 10 भी हो गया, और 9 और क्या चाहिए हमें 9 चाहिए, 9 1 9 भी हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 9 मिलेगा, सॉरी हाँ 9 मिलेगा, 9 1 9। और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 10 मिलेगा। मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है 9, 3 3 9, देखो 3 3 9, और दोनों को प्लस करके 10 मिल रहा है ना, बहुत ही ईजी है। और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x² है, तो आया आपका 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको ग्रुपिंग करा, पेयरिंग करने से 3x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3 3 9, ये बचेगा। इसमें मैं 1 कॉमन लेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो x माइनस 3 ये आ गया बाहर। अब इसमें ये कॉमन आउट कर देंगे x माइनस 3, और जो बचा हुआ 3x माइनस 1, यहाँ 1 कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है ना, 1 माना जाता है, कुछ नहीं है तो। अब ये आपका आ गया, तो अब इसको a डॉट b तो हो गया। अब अप्लाइंग क्या करें, जीरो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो मिला x इज इक्वल टू 3 मिल गया। यही तो चाहिए था हमें, सॉल्यूशन चाहिए ना, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व का मतलब x की वैल्यू चाहिए आपका, है ना, अननोन की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। दूसरा हमने b को करा जब 3x इज इक्वल टू जो था 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था है, तो ये मिलेगा 3x इज इक्वल टू 1, तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से वी गॉट बोथ द आंसर्स, बोथ द सॉल्यूशंस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द अबव गिवन इक्वेशन। तो हमारे पे आंसर आया 3 और 1/, ये तो हमें चाहिए था। अगर हम मैच करेंगे तो देख लेते क्या आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आंसर्स क्या आया आपका, ऐसे लेंगे इसको 3, 1/3, तो आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। तो 24 का मैच करके आंसर, ठीक है, 24 का हो गया, 24 का आंसर मैच हो गया। अब 25 का सेम है बिल्कुल जैसे वैसे है, तो होप यू वुड डू इन द होमवर्क। ये होमवर्क में कर लेना भैया ये वाला, और ये भी सेम है, इसको भी होमवर्क में कर लेना, क्या करने की जरूरत है, तुम खुद करोगे तभी तो आएगा। 27 तो मैं लास्ट वाला कर लेता हूँ, 27 भले ही कर लूँगा, लेकिन ये तो मतलब बाकी तो आसान था भैया जान, ठीक है। 27 कर लेते हुए, अब 27 में देख लो भाई क्या है, what is there in the 27th question, what is there in the 27th question, but it would be in English. So last question of this video. In the next video I think I would be doing some more questions which would be left of the next book, which is of the MLA book. Yes, isn't it? So what is there in 27th? 27th में क्या है कि 3a² x² ये है, और प्लस 8bx, 8abx है, abx, ठीक है, प्लस 4b² इज इक्वल टू क्या 0, वेर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वही जो मैं कंडीशन पहले थी, ये 0 हो जाएगा तो इसकी खत्म हो जाएगी, फिर कुछ निकालने को बचता ही नहीं, सॉल्यूशन बचेगा नहीं, क्योंकि x तो आपने पहले ही खत्म कर दिया। अगर a इज इक्वल टू 0 लोगे तो तब तो कुछ भी नहीं बच रहा, जिसकी वैल्यू निकालनी थी वही नहीं बच रहा, तो इसलिए उसने वैल्यू लिख दिया a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू तभी निकलेगी जब a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आपका ये हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, देखो ax² प्लस bx प्लस c, तो ax² को इसको कन्वर्ट करेंगे पहले ना, x a तो ये आपका हो ही रहा है, इजंट इट, तो ये पूरा पार्ट a है, ये वाला, दिस वन इज a पार्ट, ax² प्लस bx। अब bx में इसको तो एज इट इज आ दोगे ना आप, ये देखो ये पूरा a है, दिस वन ax² प्लस bx, b तो आपका ये है ही, और x आपका ये, तो पूरा b आपका ये जो पूरा दिख रहा है ना b हो गया आपका, है ना, ये a हो गया था, ax² प्लस bx है ना, 8abx, और प्लस c, पूरा c हो गया, याला c है, 4b² इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, तो a इंटू सी हम करेंगे तो 3a² और इंटू करेंगे 4b², है ना, ब्रैकेट में ले लो इसको ऐसे,
तो जब हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 4 3 से 12 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करने कि हमें बीच वाला ये मिल जाए। फैक्टराइज दिस इन सच अ वे, the 12 a square b square factorize in such a way to get the mid term and b. So we would be factorizing this in such a way, because c is positive, hence the factors should be we would getting in the addition form. We would add those factors to get 8. We should 8abx, we should get those factors because c is positive. So on adding, that means factors should be added over here to get 8bx. So factorizing, what we get, 4 3 is 12, and you can also factorize in such a way the 6 plus 2, isn't it, 6 plus, because 6 into 2 becomes 12, 6 plus 2 becomes 8, and 6 into 2 gives 12. So this we are getting 12, 4 into 3. So in this way we are able to factorize the above equations. So we are getting 6 plus 2, okay, 6 plus 2, and which one is that x. So this inside this constant, so we are taking 6ab, isn't it, we have to take 6ab plus 2ab, and the x should be outside, that x should be outside, the constant parts over, both are the inside, and when we multiply this we get 6 12 a square b square, and in this way when we multiply this into this we are getting 12 a square b, isn't it, we multiply this and this and this, then we are getting what, then we are getting this part, we are getting this part, isn't it, we are getting this part, multiplying this and this we are getting this part, this bracket part, okay. So that means we are doing correct. So then write down for b square is equal to 0. So now 3a square x square plus 6abx on opening the bracket, then 2abx and plus 4b square is equal to 0. So on pairing, what we get, we take out the common 3a, and there is a x also, so we are getting ax inside, and 3 to 2, and there is nothing else, because ab is out, there's one thing is left, there is a b also. So in this way 3 to 6, and then a bx, it's okay now. Now taking out here also common out, taking out 2, and along with this b part of taking out b, so we are getting ax inside the bracket, and thereafter you are getting 2 b also, isn't it. So it is matching, this part, this common part is matching, that means we are doing the correct, okay, we are solving properly. So taking out this common out, we are getting ax plus 2b, and the rest part we get is a 3x plus 2b is equal to 0. Now because it comes in the form a dot b is equal to 0, now we can easily apply the zero product rule in this. So on applying zero product rule, what we are getting, ax plus 2b is equal to 0, and say applying zero product rule. So in this way we are getting ax is equal to minus 2b. So the value of x would be minus 2b upon a. So you have solved out one, and the other one taking the b part, that one b is equal to 0. So we get 3ax plus 2b is equal to 0. That means we are getting 3ax is equal to minus 2b, which means x would be equal to minus 2b upon 3a. We have solved the other factor also, other part also, okay, not factor but the other solution also, solutions of the above given quadratic equation. We solved both the solutions, and now we are going to match it with the textbook answer, which is question number 27. 27 we are matching. This one is 27, they are perfectly, one answer is minus 2b upon a and the other is minus 2b upon 3a, which is perfectly matching with the textbook answer. So answers would be minus 2b upon a, okay, this is b, and then there is the other one 2b upon 3a. So hope we have completed this till 27th questions.
And now if there would be remaining any of the questions in the second book, MLA, then I would be solving those questions also. If there would be some kind of difference in these categories, some tough question would be there, then I would be solving that also. Otherwise, if it would be similar, then I would be telling you that to solve yourself and do it as homework. Okay students, now let's see what's there, left or not. Okay, so students, ये कुछ क्वेश्चन, देयर आर सम क्वेश्चंस लेफ्ट ऑफ द एमएलए बुक, ये वाले पर कुछ सिमिलरिटी भी है इसमें आर एस अग्रवाल की बुक के साथ भी है, तो जो सिमिलरिटी है उसमें आप खुद ही कर दो, दैट वुड बी योर होमवर्क पार्ट. एंड समथिंग दैट suppose we would be looking this question. This is question first solution of the question 1 first part. So this one, what do you see this in this question? You see this is in the quadratic form, simple quadratic form में ये question, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 10 के पार्ट करने ये सब हो जाएगा, है ना, जो अभी हम कर चुके हैं वही क्वेश्चन है सिमिलर. 10 के पार्ट करोगे ना, 5 2 10, 5 में से 2 गया 3, अपने आप ही हो रहा. ऐसे ये वाला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है आर एस से एक बुक का, क्वेश्चन नंबर 19 के सिमिलर है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट. सिमिलरली उसको भी आप कर सकते हो, क्लियर. उसके बाद आपका ये सेकंड वाला, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके आंसर सब लिखे हुए मैंने. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक फॉर्म. इसको यहाँ शिफ्ट करोगे सेम आ जाएगा, सारे जो हम कर चुके क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 आर एस से बुक का है, थर्ड का सेकंड, एक्स 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 35, बिल्कुल सिमिलर है थर्ड वाला. उसके बाद हम आते हैं, आपका सब इजीली क्वेश्चन है, सब होमवर्क पार्ट में, यू कैन डू इट इजीली. अब आगे देखो, एक ये भी आपका इजीली, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की जगह यहाँ पे पी है. फोर्थ में क्या है कि जो एक्स है ना, दैट इज यहाँ एक्स की जगह पी ले लिया फोर्थ वाले में. फोर्थ का जो फर्स्ट है 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 10 है, तो यहाँ पे x की जगह p ले लिया. तो इसके फैक्टर इसको ऐसे करने हैं, फैक्टराइज 6 इंटू 10 करोगे तो यू विल गेट 60. अब 60 को अब क्या करा, 10 6 60 है ना, 11 लाना है, तो 60 के फैक्टर्स करोगे, 2 3 6, 2 1 2 2 5 10, 3 5 15. अब कितना 15 में से 4 गया 50, क्योंकि माइनस 10 आना चाहिए, तो ये माइनस सब्ट्रैक्शन होना चाहिए ना इसमें, सब्ट्रैक्शन. तो ये आगे आपका आ जाएगा इसमें, आपका 5 3 15 और माइनस 4 15, ठीक है. 15 4 60, 10 6 60 हो गया माइनस 10, और यहाँ पे आपका p आएगा, x जगह क्या है p माइनस 10, यहाँ पे 6p स्क्वायर हो गया. तो इसको जैसे आप इसको ओपन करोगे पैकेट, तो अपने आप ही आ जाएगा, देखो प्लस 15p माइनस 4p और माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो ये आपका हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा. इसमें देखो 6 है ना, 3p लोगे आपके, p आएगा प्लस आपका 3 5 15 आएगा, यहाँ पे आएगा 4 2 आ जाएगा, 2 ही आएगा ना. यहाँ पे भी क्या था, 3 2 6 2 आएगा, 2p और माइनस 2 5 10, देखो प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इज इक्वल टू 0. अब ये दोनों आप लोगे तो 2p प्लस 5 ये मिलेगा, और जो बचा हुआ है वो 3p माइनस 2 मिलेगा, इज इक्वल टू 0. तो इसको इससे क्या आएगा, आपका a डॉट भी लगाया, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5.2 पहला, और दूसरा आएगा यहाँ ये वाले से, इसमें आएगा p इज इक्वल टू 2/3. तो ये दो आ गए इसके सॉल्यूशन. तो कौन सा था, फोर्थ का फर्स्ट 2/3 भी आया, ये 2/3 और माइनस 5.2 दोनों को आ गए इसका. बहुत सिंपल है. तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इट इज़ इन द फ्रैक्शनल फॉर्म. तो फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या करना है, जैसे हमने पहले भी करे थे, इसमें एलसीएम लेकर के बहुत ईजिली हो जाएगा. इसमें एलसीएम लोगे जैसे हमने करे थे और भी पार्ट्स में, यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म एक ही आ रहा है. तो फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है, इसमें आप फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया 2/3 x स्क्वायर माइनस 1/3 x इज इक्वल टू 1. इसमें एलसीएम लेते हैं, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में उसे एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x बन जाएगा ना, और इज इक्वल टू 1. ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें, 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 3 मिलेगा. तो ax स्क्वायर अब ये फॉर्म में आ गया, तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c फॉर्म में आ गया. तो 3 2 6 करेंगे, और 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे 3 माइनस, जिसमें आपका क्योंकि माइनस चाहिए तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या चाहिए, -6 चाहिए. तो यहाँ भी माइनस ही होने चाहिए, जो आपके जो फैक्टर्स आपने लिए हैं वो क्या होना चाहिए, माइनस. तो 3 - 2 × x हो गया -3
ये आपका 2x² हो गया। अब ये कटेगा, देखो 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये फ्रैक्शनल टाइप, ये सब टाइप में आता है, सब टाइप यानी फ्रैक्शनल फॉर्म। उसमें हम इसमें आप क्या करते हैं, एलसीएम लेके कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक बट फ्रैक्शनल फॉर्म। तो सब टाइप में है, क्वाड्रेटिक तो है ये, क्वाड्रेटिक बट फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया पहले, उसके बाद a डॉट b में हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे, आपको x बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पे आएगा 1 आउटसाइड 2x माइनस 3। तो इसमें आया 2x माइनस 3 और इसमें आया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 और इसमें क्या आएगा x इक्वल टू -1। तो ये दो आंसर्स आ रहे नहीं हैं। देखो सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसमें फोर्थ का, तो -1 भी है और 3/2 भी है। तो सब इजी क्वेश्चन हैं, यू कैन डू इट ईजिली। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देखना पड़े। ठीक है, तो होप यू वुड हैव नोटेड। तो सब इजी हैं ये सारे, जो कि ऑलरेडी वी हैव डन। ठीक है, अब यहाँ पे और कौन से क्वेश्चन है जो थोड़ा हटके होंगे तो देख लेंगे इनको। अब यहाँ पे आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। अभी फिफ्थ में देखो, ये आपका फिफ्थ फर्स्ट का, ये हमने ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो हमने सब टाइप में करा था, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना दो। इस वाले में, ये दोनों में, ये वाले में परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। और a प्लस बी ए माइनस भी आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। जैसे फिफ्थ का फर्स्ट है, फिफ्थ के फर्स्ट में 3x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147। तो इसको हम अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, √3 लिख सकते हैं। और ये x माइनस 2 तो है ही, और इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो 3 और इसका होल स्क्वायर एक ही बात है। और 147 का 7 2 जो 47, 7 3 जो 21 हो गया। तो ये आपका आ गया 7 और इसका √3 में कन्वर्ट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। सर 49 इंटू 3, इस तरह से। अब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, देखो शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। सो व्हाट वी गेट, √3 x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, -7 √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में आ गया नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ये क्या लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी इसमें हम करेंगे। तो a प्लस बी में देखो ये आया था आपका √3 x माइनस 2, एक बारी प्लस किया 7 √3 और एक बारी हमने इसको माइनस किया x माइनस 2 और -7 √3 इज इक्वल टू 0। अब ये a डॉट b हो गया ना। अब वी कैन अप्लाई नाउ द जीरो प्रोडक्ट रूल कैन बी अप्लाइड इन दिस। तो एक बारी हमने इसको लिया 3x माइनस 2 प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0 करा। क्यों करा, बिकॉज अप्लाइंग क्या करा हमने, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। सेवरल टाइम्स वी हैव सीन दिस। सो अब इसमें देखो, इसमें आएगा √3 x माइनस 2 इज इक्वल टू -7 √3। ठीक है, इसको ओपनिंग करो, x की वैल्यू निकालनी है। सो वी आर नाउ ओपनिंग इट। तो √3x मिलेगा और -2 √3 मिलेगा इज इक्वल टू -7 √3 है। क्लियर, इसको हम शिफ्ट करेंगे इधर को, कहाँ करेंगे, इधर को। तो हमें क्या मिल जाएगा, √3x इज इक्वल टू, ये प्लस आएगा 2 √3 7 √3, ये आ जाएगा नहीं आएगा। अब इसमें ऐसे, इसमें तो सीधे कॉमन कट रहा है, देखो इसमें x सीधे आ गया। देखो ये भी कट गया, यहीं पे काट देना था, बल्कि x ये कट गया, ये कटा कॉमन बाहर लेके। तो x इज इक्वल टू आ गया 2 -7 आएगा नहीं आएगा, 2 -7 देख लो जाए तो 2 -7 इज इक्वल टू -5 आ गया। x की वैल्यू -5 आई है भाई इसमें। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, x इक्वल टू -5। दूसरा पार्ट लेने पर, ये दूसरा पार्ट हम लेंगे, अभी तो हमने प्लस पॉजिटिव पार्ट है ये वाला। तो ऑन टेकिंग द अदर पार्ट, द b पार्ट, ये आएगा x माइनस 2 -7 √3 है ना। अब हम इसको सीधे जो उधर भेज देते हैं, तो ये आएगा आपका 7 √3 पॉजिटिव हो जाएगा। ये √3 से √3 कैंसिल होगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 हुआ। तो x इज इक्वल टू 7 + 2 9। तो सेकंड वैल्यू आपकी आ गई। तो इसके आंसर आ गए 9 और -5 और 9। परफेक्टली मैचिंग आज दोनों सॉल्यूशंस हमारे आ गए। फिफ्थ का सेकंड पार्ट।
फिफ्थ का फर्स्ट भी, दोनों पार्ट आ गए। अभी आपका जो कौन सा है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी ऐसी है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, इट्स ऑल्सो सिमिलर। द सेकंड पार्ट, you see the second part. So what's there in the fifth second part? There's nothing to worry for this question because it is also the same. You can make it a perfect square, you can change it into a perfect square. What is there in the second part? You see 1 upon 7 3x minus 5 whole square is equal to 28. So on cross multiplying, what we get, 3x minus 5 whole square is 755 or 740, 196 you get. See, making it a perfect square, we will factorize this. So what we get it, 2 9 8, 2 8 is 16, so 2 4 is 8, 2 9 is 18, 7 7 is 49. So factorizing, what we get, on factorizing we get 7 into 2, that means 14 whole square. So on shifting this towards left, we get this, okay, is equal to 0. That means we are getting it a square minus b square is equal to 0. A square minus b square is equal to 0, which gives a plus b and a minus b. So in this way we are able to factorize these, 3x minus 5 and then plus 14 and then 3x minus 5 minus 14 is equal to 0. So on solving, what we get, 3x plus 9 because this is greater number, and here we get 3x minus 19 is equal to 0. And in this way we get a dot b is equal to 0. Now zero product rule can be applied over this. So on taking this a part is equal to 0, we get 3x plus 9 is equal to 0. That means 3x. So what we did, we are to write down applying zero product rule. So we got 3x is equal to minus 9. So 3 3s are 9. That means we are getting x is equal to minus 3. This is one of the solutions of the given equation. Now solving the b is equal to 0, taking b part, b is equal to 0, other part, so 3x is equal to 19. That means we are getting x is equal to 19 upon 3. That means we are getting x is equal to 19 upon 3. 19 upon 3. Okay, we are getting x is equal to 19 upon 3. So in this way we got both the values. These both are the answers to this above given questions. So x equal to 3 is 1. We can match this to the textbook answer. So for fifth second part, we're getting minus 3 and the other is 19 upon 3. Perfectly correct. 19 upon 3. Perfectly correct. So now we move on to which part? Now we're moving on to that one. Sixth part, you see what's there in sixth part. Sixth and seventh both equal to the question number 21. They are similar to the question number 21, 22, 23 of RSA book. So this would be your homework part. This you can easily, this one would be your homework part. Okay, now we would be doing the eighth part, isn't it? Eighth. However, these both are similar. These both questions are similar to the question number 27 of the RSA book. Both. So the part 1 you can do it as this one homework, and however I am doing the 8th second part. Doing the 8th second part. 8th second part. Okay. तो 8th का जो सेकंड पार्ट है, 8th का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट. हालांकि सब हम कर चुके हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि भाई कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसमें, सिंपल है, फिर भी हम करते हैं, देखते हैं. एबल टू सॉल्व. सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं है, इसमें क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर
माइनस पी प्लस क्यू और इंटू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये तो बोला गया सेकेंड पार्ट में, 8th के सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसने खुद ही जो है देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, इजंट इट। तो साथ में इसमें ब्रैकेट भी यूज़ करनी, यानी कि ऐसे नहीं लग रहा आपको कि ये फैक्टर्स हैं, ये पी और क्यू, और पी इंटू क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपने आप ये बन गया, देखो यानी ये खुद ही बन गया, यानी ए इंटू सी रहा होगा ना पहले, तो जो भी रहा होगा ए तो 1 है, तो ये खुद ही आपका सी रहा होगा, तो ये सी है। तो सी के यानी पी क्यू जो सी है इसी के कुछ उसने फैक्टर कर दिए, और जिनका मल्टीप्लाई क्या रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई पी क्यू आएगा, और इनको जब ऐड करेंगे तो पी प्लस क्यू आएगा, सिंपल है। इनको ऐड करने से, दोनों को ऐड करने से पी प्लस क्यू आ ही रहा है, यानी सी बराबर क्या रहा होगा, पी क्यू रहा होगा। तभी तो जब हम इसको सी को हम पार्टीशन ऐसे करेंगे क्योंकि सी पॉजिटिव, तो इनके जो फैक्टर्स होने प्लस होने चाहिए, तो प्लस होने चाहिए पी प्लस क्यू होगा। अब मल्टीप्लाई क्यों होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू होना चाहिए, पी क्यू, तो सिंपल हो गया। तो इसको इन्होंने खुद ही सब हमें करके दे दिया है इस वाले क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट को ओपन करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, और जब हमें मिलेगा इस फॉर्म में, हमें मिल जाएगा ए डॉट बी फॉर्म में, हमें सीधे इसको अप्लाई करके और आंसर सॉल्यूशन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0 आया। अब हमने इसको देखो ये कर लिया। अब x हमारा बाहर आया तो x माइनस पी आएगा, माइनस फिर हमारा q आएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा आपका, x q बाहर लिया ना, x माइनस पी हो जाएगा। तो अब हमने इसको कॉमन को आउट ले लिया, तो x माइनस पी आएगा और x माइनस क्यू आएगा इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी फॉर्म में आ गया। हम इसमें क्या लगाएंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो x माइनस पी इज इक्वल टू, ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, इज इक्वल टू 0, अप्लाइंग जीरो प्रोडक्ट रूल। तो इससे हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू पी मिल गया पहले वाले पार्ट से। अब फिर हमने इस वाले p पार्ट को लिया, x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 लिया, तो इससे मिल गया x इज इक्वल टू क्यू मिल गया। तो ये जीरो प्रोडक्ट रूल में दोनों निकले, यानी क्या आंसर है हमारा, आंसर जो आए वो आया p और कॉमा q आया इसका 8th का सेकेंड पार्ट। तो p कॉमा q आ रहा है आंसर, ये आंसर्स आ गया आपका आंसर्स। तो सेकेंड पार्ट भी हमने कर दिया इस तरीके से। अब नाइन्थ वाला सिंपल, देखो इसमें भी ऐसे ही देगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ ना नाइन्थ में, कुछ नहीं है इसमें, नाइन्थ वाले में भी, नाइन्थ वाला में सेम है, बिल्कुल इसी की तरह है, सेम, ठीक है। नाइन्थ वाला सेम है इसी की तरह, जैसे ये देखो इसको और इसको मिलान करो, इस यही वाला था ना ये, तो ये भी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये खुद ही इन्होंने फैक्टर करके दे दिया, ए और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, उधर ए है, ए स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर बी से प्लस करोगे तो दोनों को ये आ जाएगा। तो ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, सेम टाइप के हो गए, मतलब है ना, दोनों के दोनों सेम टाइप के हो गए। खुद ही दे रखा उन्हें फैक्टराइज करके सॉरी इसके वो बना के ना फैक्टर्स करके सॉल्व करके दे रखा, मतलब सॉल्व करके खुद ही दे रखा है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो नाइन्थ वाले में तो कुछ नहीं है, फिर भी मैं आई एम एबल starting doing this ninth question. So in the question what is there, you see it is x square x square plus a square plus b square into x plus b square is equal to 0, where a should not be equal to 0. That's fine, because if a would be equal to 0 then we couldn't get the value of the solution, that is we won't be able to find out the value of the x, hence a should not be equal to 0. It is justified. So here what we see, it is in the quadratic form, x square plus bx plus c, this whole is b, this complete portion is b, okay, and this is a x square, this is a, this is b whole portion, x square bx plus c, this one is the c part. So what we do when it is in the quadratic form, then we multiply a into c we do to get the b, and when that a into c is positive, we see here it is a positive, because a into c to a square or into c, that means b square. So we are getting a square b square, isn't it? So this one is positive, and it should be this positive part should be factorized in such a way to get the b. That means if we factorize a square plus b square, we multiply this both, then we are getting a square into b square, which is the c. And if we add these both terms, these both factors we add,
then we are getting a square plus b square, which is the b part. This is the central part, and we are getting really this b part also, isn't it? That means it has been completely factorized, so completely solved. And now what we will do, we will more it is to be solved, taking out the bracket. So what we are getting, we take out the bracket, so we are getting a square x plus b square x plus b square is equal to 0. And now taking in groups, so taking out the common outside, what we get here, x plus 1 we get, and taking out b square common, we are getting x plus 1 is equal to 0. Now this is the common part, taking out the common part, and the rest part we are getting a square plus b square is equal to 0. Now this becomes a dot b is equal to 0 form, and that means 0 product rule can be applied to it. So taking this a part to 0, x plus 1 is equal to 0, we are getting x is equal to minus 1, one solution we got, and the other one b is equal to 0, and applying what, 0 product rule, and taking the other rest part, we are taking the rest part. So what we are getting, we are getting a square x is equal to minus b square. In this way we are getting x is equal to minus b square upon a square. So we also got the other solution. So these both are the answers to the solution of the given quadratic equation. So let's check whether they are matching or not. So first of all, yes, perfectly matching, the answers are minus 1 and minus b square upon a square. There should be a square, so we missed a square, isn't it? This is a square, so a square, so perfectly matching, hence these are the answers to the solution. So in this way we have covered the 9th question also. And now you see all the rest one, you are able to see that all the rest one, whether it is 10th one, whether it's 11th one, these all I have completed, I have finished this in the video 2 of the RSS book. Yes, so do see video number 2 of in RSA. I have covered all these 4 questions. Okay, you can see it properly. So in this way I have covered the 5 point MLA book also, that 5.2 exercise we have covered. Okay, now I am erasing it. अब क्या है, ये सब हो चुका है कंप्लीट. अब जो है जाते जाते क्या करा जाए, 2-4 जो है आपको कुछ और सिखा देते हैं साथ में, साथ इसके साथ थोड़ा बहुत 2-4 वर्ड इंग्लिश के भी सिखा देते हैं, इंग्लिश के, तो लिटिल बिट यू कैन लर्न इंग्लिश ऑल्सो. अच्छा, इंग्लिश थोड़ा 2-4 ऐसे हैं, फिनिश करते करते थोड़ा सा एक आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा. तो पहला जो वर्ड है एमिनिटीज़, एमिनिटीज़ क्या होता है, अगर पता है तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स. एमिनिटीज़ होती है सुविधाएं. थोड़ा इंग्लिश भी सीख लो जाते जाते ना. अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अद्भुत, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव को ढंग से लिखा है ATTR, अट्रैक्टिव, अद्भुत. ठीक है, लास्ट में थोड़ा इंग्लिश भी सीख लो. एपिटाइट, APPE, एपिटाइट, भूख, हंगर, एपिटाइट हो गया भूख. ऑफुल, 4-5 वर्ड सीखेंगे. ऑ, ठीक है, AWFUL, ऑफुल का मतलब होता है हॉरिड, यानी कि भयानक. और लास्ट में एक वर्ड और सीख लो, ऑसम, AW, ऑसम, ऑसम मतलब बड़ा सुंदर, इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया, इम्प्रेसिव यानी बहुत इम्प्रेसिव, SSIV, ओके, बहुत बढ़िया. तो इस तरह से 5 वर्ड्स आ गए, और इसमें इंग्लिश से मैंने सिखा दिया साथ साथ. ठीक है, ये रिलैक्स हो जाता है थोड़ा, ये पढ़ो बोलो, एंटरटेनमेंट भी हो गया. So students, in this way I've covered both the books, RSMLA book, and now we move on to the next exercise here. So thank you for watching, students. Hope this find you the best
and we would be meeting you in the next video number, which would be video number 5. Okay, thank you.